Hello dear viewers, we have a very nice topic to discuss today, and the topic, as you can see just above my head, it is development. And let me tell you one thing, that we all are directly related or connected to this term development. Now you will ask me a question, how we are connected to development. Let me explain. We all are parts of an economy. As we know, in an economy, people work, people do various types of activities to fulfill their needs, right or not? So we all are engaged in one or another type of activity. So every economy in the world, every economy, irrespective of its standard, its wealth, its GDP, its income, whatever, every economy tries to achieve more and more development. So being part of an economy, we all are parts of an economy, isn't it? We are part of the world economy, we are part of the Indian economy. So being a part of the economy, somehow our life, our living status, our activities, all these things are affected by the development of the economy. I hope you understand. Now, as we all know, every human being wants to have a better standard of living. You want it, I want it, all the people, each and every person aspires for a better living standard. Since the inception of human civilization, man has been trying to make life better, to make life smoother and easier. And that's why we see various types of innovations, various types of transitions are taking place, new things are coming up, our old things are becoming outdated, isn't it? And we always try to move ahead, we always try to fulfill our desires, our needs, and for that we always try to put our best efforts. So in this way, development is a very, very relevant topic to discuss, right? I hope after discussion of this topic, you will try to find out certain very, very important things, such as what is the meaning of development. As I told you, it is a very commonly used and frequently discussed term. People often use this term while discussing about development of the nation, development of a country, about income of the people, poverty, employment, all these things. When we discuss on these topics, this term is frequently used, commonly used by people. But the question is, do we really understand what development means, or do we people have the clear notion or a clear concept of development in our mind, or does it have some other aspects, does it mean something else, right? Sometimes, you know, people have much money, they have money, they have all the material things in their life, still sometimes we feel depressed, sometimes we feel lonely, sometimes we are in tension, we feel helpless. Why does it happen? So do you think that income is the only thing that can fulfill our needs and requirements? Is money everything in our life, or there are certain things which are more important than money? Okay, so these are some very, very interesting things that we are going to discuss. So stay with me, and I hope and I'm sure that this class will be informative for you as well as interesting for you. So here we go. So what basically we are going to learn in this topic? The topics to be covered in this particular video are, as you can see, it is meaning of development. Meaning of development. As you can see, what is the meaning of development? First we'll discuss, because that is the essence of the topic. We must have a very, very clear cut idea about development. We shouldn't be biased. We shouldn't be confused. Okay. The meaning of development should be clear and transparent, right? Then how people can have different developmental goals. People can have different developmental goals. That means what I feel development for me, it may not be development for some other person. Or what is development for a place which is in, suppose, Pakistan or in America,
that may not be development in India. So that's how development can have different meanings for different people. Third, we'll discuss developmental goals can have different for different persons, even destructive for some. This is more important. Development, as I told you, it can have different meanings. At the same time, sometimes what is development for some people, that can be very dangerous and destructive for some other group of or categories of people, right? We'll see that. Then income and other goals as symbols of development. Just before some time I was discussing with you, is money everything in our life, or is just rise in the income in our life mean everything in our life? So these are the concepts that we have to discuss. Okay, income, no doubt everyone wants to have more income. When we work for some organization or we are employed in some institution, obviously we expect to have more and more income. We always try to switch over to better jobs. Okay, people always look for better jobs, better salary package, all these things, and better facilities. So does that mean development, to have more income and more money, right? So we'll discuss that. Next, national development. What is national development? Another important thing, we all are part of the economy, and whatever we feel to be development, whatever target we make, whatever activities we perform, we should always see that it brings development for the nation. It shouldn't be that it shouldn't be like that we achieve something and that becomes destructive for the nation, or that becomes very harmful for another group of people. In this situation we cannot achieve national development. So national development should be all round development of the nation. Okay, so these are the things that we are basically going to focus in this video. So let's proceed. So I would like all of you to have a glance on the terms which are mentioned in the boxes. What are these? Like more income, modern facilities, job opportunities for all, better healthcare system, pollution-free environment, peace and harmony in society, more leisure and freedom, responsible and committed government. I hope all of you understand these terms, right? So just give a second to yourself and think, do we all expect these things to happen in our life? Do we want more income in our life? Those people who are working, as I told you, they always want to have more income, a hike in their income all the time, every year, right? We all want a pollution free environment. Who would like to live in a polluted environment, to develop various types of diseases and health hazards? So everyone wants to live in a very clean and pollution free healthy environment, right? We all want to have better job opportunities. When we pass out, when we complete our degrees from universities or schools and colleges, then obviously we look for a job and we expect that jobs should be there for us, right or not? Similarly, we all want peace and harmony in the society. These are some very important things which cannot be purchased with the help of money. Peace and harmony. No doubt money is important, no doubt material things are important. Okay, so do these things only fulfill our need, or there are certain more important things in our life, like peace and harmony? Peace of mind everyone desires. Harmony, as you know, people expect other people to behave friendly with them. We all expect to live in a peaceful and a mutual understanding situation. There should be brotherhood. There should not be any kind of clash or conflict among the people. There should not be any kind of dangas. Okay, so when we are living in a society, we should be social. We expect other people to also be social, right? And when there is no conflict, no quarrel, no fighting, then we feel that yes, we are living in a peaceful environment, and that brings peace to our mind. Everyone expects that or desires for that. We all want more leisure and freedom, right or not? We want some leisure in our life. Though we all are busy in one or another activity, every person is engaged in one or another activity, but sometimes we want some break, and that break is called leisure, right or not? We all want freedom. Freedom of what? Freedom in the sense we want to express our views. If we want to do something, we want that there should not be any kind of unnecessary objections or prohibitions.
right or not? Similarly, we expect to have better healthcare system provided to us. Healthcare system, that means when we feel sick or when we feel unhealthy, we need to see a doctor, we need some treatment, we go to the hospital, we will always expect, we will always desire that the hospital should have good facilities available for us, right or not? And last but not the least, here you can see responsible government and committed government. What does it mean? When we vote for some leaders, we choose our leaders to form the government. The responsibility of the government is to fulfill the needs and the requirements of the people. We expect the leaders to listen to our problems, to try to solve our problems honestly, and not to let us down, not to feel us that we have given votes to a wrong person. So these are some expectations that each and every person in the society have, right or not? Let's move. Now we'll see what is the meaning of development. See, development means favorable changes in our surrounding that make our life better than ever. As I told you, every human being wants to have a better life, right or not? What our life was some years back, we would like to make it better and better every day, and that's why all of us are trying, right? So, and as you know, change is unchangeable law of nature. Change will take place, change cannot be stopped, changes cannot be prevented, and we all want changes. But what type of changes? We want changes which can make our life easier than before, which can make our life better than before. And if we can achieve such changes, that is called development. Any type of change in our surrounding which make our life better is called development. Let me just give an example. There was a time when there was no transportation system. There was a time when there was no money called barter system. Okay, so people were facing a lot of difficulties for moving from one place to another, to carry goods from one place to another. When there was no money, people were in difficulty to exchange goods with each other, right? But now various means and modes of transports are available to us. Now we have got various ways to purchase things. There is money, we can use credit card, we can use debit cards, we can use online payment system. So these things have made our life better. You can really feel it. You might have experienced it in your real life situations. So when things are becoming better for us and they make our life more and more convenient, those changes are called development. Okay. Next, it is a comprehensive and subjective term. What is the meaning of comprehensive? I would like to just brief you here. Comprehensive means it is a very broad term. We cannot confine the meaning of development to some mere words. We cannot define development in 5, 6 or 10 words. Development has a very broad meaning. Okay. It varies from person to person. What is development for you, it may not be development for me. What is development for me, it may not be development for X, Y, and Z. So in this way, it has got a very much different and very versatile aspects, right or not? Next, it is subjective term. Subjective in the sense it varies from person to person and situation to situation. That is called what? Subjective in nature. Next is the meaning of development may vary from person to person and from situation to situation. We are going to discuss this particular concept with examples in our coming slides. Okay. So let us proceed. So basically these are the characteristics of development or meanings of development. If you are asked in the examination question what is development, you can mention these particular terms. Okay. So what are developmental goals of people? Let's see. So as we know, everyone wants development. We want development. Any child also want development. So people those who belong to
poor category, they want development, farmers want development, industrialists want development, each and every person in an economy what desires for more and more or better development, right. Now we'll take some examples how developmental goals or expectations or targets vary from person to person. What is development for different categories of people? Some examples we will cite here. Okay. So, for a landless rural laborer, in class 9 there is a chapter Palampur, village Palampur. In that chapter we discussed that in the village Palampur, many farmers are there who do not have their own land, but they cultivate land for others. That these people are called landless workers. Now, their basic livelihood, their basic or means of livelihood is what? Casual work. If they get some work, that is the source of income for them, nothing else. So, for such a person who always depends on casual work, who is always looking for work here and there, what can be development for him? More days of work with better wages, isn't it? Obviously, he would expect to have more and more days of work. Work should be available to him all the time, and he should be getting better wages from time to time. Then he will feel that he is living in a peaceful state of mind. He needn't worry about getting work or getting money to fulfill his needs, right. At the same time, such people, those who belong to poor category or those who live in rural areas, they don't have so much amount of income that they can afford their children's education in good schools in urban areas or cities. Okay, even though they dream, even though they want that, but it is beyond their capacity to afford such things. So obviously, such people would like to have schools in their own village or in the nearby neighboring villages, so that their children can get education from those areas. So if there is a government school in the village in which they are living, and in which school they are getting free education for their children, obviously that means development for them. They won't expect a very international type of school or a very modern school to come up in their village, because this is meaningless for them, because they cannot afford all these things. Okay. Next, environmentalists and nature lovers. As you know, environmentalists and nature lovers, those people who are very particular, very sincere, or they are dedicated, committed for the preservation of the nature, preservation of the species of plants and animals. What do they expect? What is their perception regarding development? Obviously, conservation of the flora and fauna, because an environmentalist always works for the betterment of the environment, to keep the environment healthy, right or not, to protect the environment against unnecessary damages made to it by various human activities, right, like deforestation and emission of pollutants or polluted gases from industries, then killing and poaching of animals. So these things should be prohibited, these things should be checked. That is development for people who are lovers of the environment and those who love nature. Similarly, people in urban areas, those people who live in cities and towns, what would they expect? They expect for better amenities in life, like good healthcare system. They want good education facilities for their children. Obviously, they won't like to have a simple and normal school in their area, because they have money, okay, and they are ready to spend money for their children. So they always expect to have better facilities in life. Okay, they want safety and security of life and property. Obviously, when we live in an urban area, in urban areas, you might be coming across in newspaper, on television, that one and other type of criminal activities are taking place, and people are harassed, people are looted. Okay, so there is a sense or feeling of insecurity always when we live in an urban area. That's why police system is there, okay, security system is there everywhere, you can find. So when we live in an urban area, what we expect,
better facilities, and at the same time safety and security of our life and of our property. If these things are achieved for these people, it is development for them. Now, what about small and middle class farmers? Small and middle class farmers are those farmers who have land but very limited, and that land is not sufficient to fulfill their needs. And sometimes, if they get a better harvest or better production, they sell it to some customers or sell it to the government. As you know, MSP means minimum support price. A farmer, small farmer will always look forward to better irrigation system. That means if he gets proper irrigation system for his crops, then he can have more production, and if he has more production, if he can sell it to the government at MSP means at minimum support price. Minimum support price, what is that? The price which is announced by the government for the farmers to procure crops from them. That means before the harvesting season or before farmers start cultivation, what the government does, sometimes it announces a price to purchase the crops from the farmers, so that after the harvest the farmers can sell the crop to the government at that price. So if the farmers can get better MSP and they can get financial help from the government, these are development for these people. Okay, so you might have understood that for different categories of people, their goals, their target, their expectation about development can be different. Now, different conflicting and destructive developmental goals. As I told you before, sometimes developmental goals can be very much destructive also. No doubt they are different. Just now we saw it, developmental goals can vary from person to person. They can be conflicting. We will see how it can be conflicting. How conflicting means it can be what it can have different types of objections. Okay, people can have different types of opinions about development. So developmental goals can be different, can be conflicting, and sometimes it can be destructive. So we'll try to understand it with some situations. First, we will see on the construction of a multi-purpose river dam. So as you know, multi-purpose river dam, we construct dams and rivers. We we store its water. We construct reservoirs. We store its waters, and after storing its water, we try to generate electricity. We make arrangement for fishing. We make arrangement for controlling floods. Then a multi-purpose river dam can also attract tourists to that spot, and it can be a source of revenue or income for the government as well as the local people. So in this way, there are many purposes for which we construct river dams. Now the question is, construction of a river dam, is it a sign of development, or do you consider it to be a step forward towards development, or is it development? Let us see. So what about the people, those who are called industrialists, those who have industries, and the urban dwellers, means those people who live in urban areas? What is their view about construction of a multi-purpose river dam? Support the construction because it would be beneficial for them. Obviously, an industrialist would like to have more and more dams, because to run his industry he needs electricity or energy, and if there are more dams, he can get energy supply continuous supply of energy at lower prices, and that can be profitable for the industrialists, right or not? At the same time, urban dwellers, those people who live in urban areas, they also expect to have more and uninterrupted supply of electricity to them, because we know in towns and cities we depend on many electrical gadgets like refrigerator, television, then air conditioners, grinder machines, all these things, washing machines. So these things, these appliances run with electricity. So without electricity we cannot use them. So those people live in urban areas, for them multi-purpose river dam construction is a sign of development, because this will make their life better and easier, and that is why this is development for these people. But just think about the tribal people of the locality. Suppose there are some
tribal people living in that particular area where we are proposing to have that river dam. What will happen to them? Obviously, when we go for a reserve here, we have to deforest the land. That means it will cause deforestation. Secondly, the people, those who live in that area, because we know India has got various types of tribal people, because they live in their own tribe, they have their own way of living. Okay, these people they prefer to live in their own habitats, in their own society, and they have their own livelihood, and they are confined to their particular area. So they have their very unique type of culture in themselves, right or not? So what about these people? When we construct a dam, are we going to put them into trouble? Just think of it. Okay, obviously, because when we construct a dam, these people will be displaced. These people, they will lose their livelihood, they will lose their habitat, they will lose their cultivable land, whatever, and we are going to rehabilitate them. Rehabilitate means the government promises that after displacement they will be given land in some other areas so that they can set up their houses and they can stay there. But do you think these people can live in a very new environment, and when we are exposing them to a very different kind of living, different groups of people, okay, to which they don't belong, they may not adapt to it so easily. So obviously these people, they may not support the idea of construction of a dam in their area, because it will just welcome numerous troubles for these people. That's why these people do not support it, or they don't think that construction of dam is a sign of development. As you know, in your book it is given the construction of Sardar Sarovar Dam on the river Narmada, right? नर्मदा बचाओ आंदोलन, एक आंदोलन हुआ था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। किसके लिए हुआ था? सरदार सरोवर डैम जो कि प्रपोज किया गया था 1980s में, उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ कहाँ पे? एंड दिस जो नर्मदा रिवर के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन होने वाला था, दैट इज कॉल्ड नर्मदा रिवर वैली प्रोजेक्ट और सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट। इट वाज गोइंग टू अफेक्ट द स्टेट्स ऑफ गुजरात, एमपी एंड महाराष्ट्र। ये देखा गया कि ये सारे स्टेट्स के लोगों को, वहाँ उस डैम के आसपास जो लोग रहते हैं, इट वुड बी अफेक्टिंग देयर लाइफ। अराउंड 45,000 फैमिलीज वुड बी अफेक्टेड एंड 2,25,000 से ज़्यादा लोगों को रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या हुआ ना, वहाँ पे डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया। द लोकल पीपल दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हम दिखा सकते हैं कि जो हम लोग सोचते हैं कि डेवलपमेंट है, वो दूसरों के लिए डेवलपमेंट नहीं भी हो सकता है, राइट। और एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा मैं यहाँ पे, पोस्को आपको आप सुने होंगे। पोस्को मीन्स पोहंग स्टील कंपनी, ए साउथ कोरियन स्टील मेकिंग कंपनी, जो कि ओडिशा में, इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, इन द ईयर 2005 उसने ओडिशा में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ओडिशा गवर्नमेंट के साथ एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन किया था टू स्टार्ट स्टील प्रोडक्शन इन ओडिशा। बट जो एरिया में वो स्टार्ट करने वाला था, वहाँ के जो लोग हैं वो उसको प्रोटेस्ट करने लगे ऑन द ग्राउंड ऑफ इन्वायरमेंटल एंड अदर रिलेटेड इश्यूज़, कि इसे होने से फॉरेस्ट लैंड लॉस होगा, लोगों का वहाँ से पॉल्यूशन स्प्रेड करेगा, एंड मेनी सच कंप्लेंट्स वे आर लॉस्ट बाय द लोकल पीपल एंड फॉर विच द कंपनी कुड नॉट स्टार्ट इट्स बिजनेस एज पर प्लान। ठीक है, चिपको मूवमेंट आप लोगों ने सुना होगा। 1973 में प्रेजेंटली जो उत्तराखंड है वो तब उत्तर प्रदेश में था, तो उस समय उत्तर प्रदेश के गढ़वाल एरिया में, उस तरह के वो जगह जो है, वहाँ पे चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ। चिपको मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ? वहाँ पे एक फॉरेस्ट एरिया था, हिमालयन एरियाज़ में जो फॉरेस्ट एरिया था,
वो फॉरेस्ट एरिया को कुछ फॉरेन कंपनीज को लीज में दे दिया गया था, सो दैट दे कुड कट डाउन द ट्रीज एंड दे कैन स्टार्ट लॉगिंग बिजनेस। लकड़ी से वो लोग कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करेंगे, इसके लिए उनको परमिशन दे दिया गया था बाय द गवर्नमेंट, राइट और नॉट। बट वहाँ के लोकल लोगों ने उसको प्रोटेस्ट किया, ठीक है, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने पेड़ को काटने से रोका, एंड इट वाज ए वेरी नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, एंड women, children, students, each and every person from different walks of life, different parts of the society, they joined the movement in massive numbers, and it resulted in what? As you can expect, ultimately the government had to change its decision. वो लीज को कैंसिल किया गया एंड द फॉरेस्ट कुड बी प्रोटेक्टेड, राइट और नॉट। सो इसी तरह से जो हम लोग को लगता है कि डेवलपमेंट है, वो कुछ दूसरे लोगों के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, रेदर इट कैन बी मोर डिस्ट्रक्टिव फॉर देम, इट मे पुट देयर लाइफ इनटू सीरियस सिचुएशंस। ओके, नेक्स्ट और एक एग्जांपल हम लेंगे ऑन द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन फील्ड। अगर केमिकल फर्टिलाइजर हम फील्ड में यूज़ करते हैं तो क्या होगा, जैसे कि आजकल हम यूरिया वगैरह बहुत सारे टाइप का केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं फील्ड में, तो इससे क्या होता है ना, प्रोडक्शन बढ़ता है। अगर प्रोडक्शन बढ़ती है तो एक फार्मर को फ़ायदा होगा, है कि नहीं। एंड फार्मर से जो वो सपोज एक फार्मर शुगर केन प्रोडक्शन करता है, कोई फार्मर कॉटन कल्टीवेशन करता है, कोई फार्मर व्हीट कल्टीवेशन करता है, तो जब उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, या तो शुगर केन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, वो क्या करेंगे, वो लोग अपना प्रोडक्ट को जो है इंडस्ट्रीज़ को भी बेचते हैं, जो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, व्हाट इज़ दैट, फ्लोर मिल्स, एंड ये हो गया आपका शुगर मिल्स, ये सब जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो फार्मर से अपना रॉ मटेरियल खरीदते हैं। तो अगर केमिकल फर्टिलाइज़र हम यूज़ करेंगे, फार्मर का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फार्मर के लिए अच्छा है, वो सोचेगा कि ये डेवलपमेंट है मेरे लिए, और इंडस्ट्रीज़ को भी रॉ मटेरियल अच्छा से मिलेगा, वो लोग भी सोचेंगे कि उनके लिए डेवलपमेंट है, हाँ कि नहीं। बट जस्ट थिंक, इज इट डेवलपमेंट फॉर नेचुरलिस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट? Those people, those who love nature, those who they work day and night and they fight to protect and preserve the nature, क्या उन लोग के लिए use of chemical fertilizers in the field is a sign of development? May not be, it may be no, yes or no। क्यों? क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र हम जब यूज़ करते हैं, ये सॉइल को कंटामिनेट करता है, इट डिग्रेड्स द सॉइल क्वालिटी, एंड जब बारिश होती है, ये जो फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं वो बारिश का पानी में डाइल्यूट होके कहाँ मिलता है, रिवर में मिलता है, एंड ग्रेजुअली रिवर टेक्स द वाटर टू द सीज एंड ओशंस, एंड सी एंड ओशन में जो मेरीन लाइफ है वो एक थ्रेट में आ जाता है, एंड इट डिस्टर्ब्स द व्हाट एंटायर इकोसिस्टम इन द ओशन एंड सीज। तो ये जो चीज़ें हैं, मोर ओवर रिमेंबर दैट व्हेन वी कंज्यूम द फूड विच हैव बीन कल्टिवेटेड बाय यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, दैट इज ऑल्सो अफेक्टिंग आवर हेल्थ सिस्टम, राइट और नॉट। हमारा हेल्थ डिग्रेड कर रहा है धीरे धीरे, जो कि हमको पता नहीं चल रहा है, बट स्लोली वी आर गेटिंग पॉइजन्ड एवरी डे बाय कंज्यूमिंग सच व्हाट केमिकली ग्रोन फूड्स। सो इस तरह से नेचर लवर्स जो होते हैं, फॉर देम यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मे नॉट बी साइन ऑफ डेवलपमेंट। ओके, तो क्या देखा हमने कि जो आप लोगों के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे कुछ लोगों के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, रेदर ये डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। ओके, विल प्रोसीड ना। इनकम एंड अदर गोल्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि हम डिस्कशन करने वाले हैं। मोर इनकम एंड पोजेशन ऑफ बेटर मटेरियल इज ए कॉमन डेवलपमेंटल गोल ऑफ मोस्ट पीपल। देखो, ज़्यादा इनकम और बेटर थिंग्स इन आवर लाइफ, जैसे मॉडर्न मोबाइल फ़ोन हो गया, बेटर एयर कंडीशनर हो गया, मॉडर्न लेटेस्ट व्हीकल, गाड़ी बाइक हो गया, ये सब चाहते हैं कि अपने पास हों। बट देयर आर सम मोर इम्पोर्टेंट एंड नॉन मटेरियल थिंग्स दैट पीपल विश फॉर इन लाइफ। बट इनकम से, पैसा से भी ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं जो कि हम चाहते हैं हमारी लाइफ में, जो हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है, राइट और नॉट। अदरवाइज सिंपली वी आर लिविंग, वी आर नॉट एंजॉइंग योर लाइफ। टू एंजॉय आवर लाइफ we need money, no doubt, but money is not the only thing that we need. There are many more important things that we need or we desire, we have to have in our life if we want to survive happily. Okay, तो क्या चीज़ है ये सब?
कुछ एग्जाम्पल आप खुद इसको समझ सकते हो कि फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रीडम चाहिए, वी वांट इक्वल ट्रीटमेंट एट होम, वी वांट इक्वल ट्रीटमेंट इन आवर ऑफिस, वी वांट इक्वल ट्रीटमेंट इन द सोसाइटी। हम जहाँ भी कहीं भी जाते हैं सब हम चाहते हैं कि दूसरों के साथ जैसे बिहेव किया जाता है, दूसरों के साथ जैसा अच्छा ट्रीटमेंट किया जाता है, हम लोग के साथ भी ऐसा अच्छा ट्रीटमेंट हो। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ पार्शियलिटी और एनी काइंड ऑफ इंडिफरेंट एटीट्यूड शोन टू अस, राइट। सिक्योरिटी एंड लाइफ, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हम चाहते हैं। गुड फ्रेंड्स एंड नेबर्स, वी कैन नॉट परचेज दिस थिंग्स विद द हेल्प ऑफ मनी। अच्छे दोस्त, अच्छे पड़ोसी, नेबर्स हमको पैसा दे के नहीं मिलेगा, ओके। अगर आप लकी हो तो यू विल हैव गुड फ्रेंड्स एंड यू विल हैव गुड नेबर्स एंड देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस पीपल इन आवर लाइफ। देन पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हर किसी को चाहिए, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमको कम से कम एक अच्छा क्वालिटी का ऑक्सीजन मिले, ओके ना। हम जो एरिया में रहते हैं हम सोचते हैं कि वहाँ का पानी अच्छा हो, सो दैट वी कैन यूज़ इट, वी कैन ड्रिंक इट विदाउट एनी काइंड ऑफ फियर। तो गुड वर्किंग एटमॉस्फेयर, हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ का वर्किंग एटमॉस्फेयर अच्छा हो, हमारे एम्प्लॉयज़ अच्छे हों, हमारे बॉस अच्छे हो, ये सब चीज़ें हमारे लाइफ में बहुत मायने रखती हैं, हाँ या नहीं, ओके। सो दीज आर सम मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स अपार्ट फ्रॉम इनकम दैट वी एक्सपेक्ट इन आवर लाइफ, ओके। तो अगर ये चीज़ हमको मिलती हैं तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि हमारा लाइफ डेवलप्ड है, ओके। सो दीज आर सर्टन थिंग्स दैट मीन मोर, जैसे कि मैंने बताया ये कुछ चीज़ें हैं जो कि पैसा से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिमेंबर there is a statement made by some people that money can purchase us a house but it cannot purchase us a home. Money can purchase us medicines but money cannot purchase us health. Money can purchase us a bed but money cannot purchase us sleep. पैसा हम लोग के लिए ये सब खरीद सकता है, बट जो कि हमको चाहिए, जो हमारे लाइफ में रियली इम्पोर्टेंट है, वैल्यूएबल है, वो चीज़ पैसा से ख़रीदा नहीं जा सकता है। तो पैसा के साथ साथ हम लोग को ये सब चीज़ें भी चाहिए, जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी, सिक्योरिटी, गुड फ्रेंड्स, गुड नेबर्स, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। दीज थिंग्स रियली मेक आवर लाइफ हैप्पी एंड मीनिंगफुल, ओके। तो ये है डेवलपमेंट का कंसेप्ट फॉर अस। लास्टली नेशनल डेवलपमेंट। तो नेशनल डेवलपमेंट हम जो बोलते हैं, नेशन, वी ऑल आर ए नेशन, वी से इंडिया इज ए नेशन एंड वी आर पार्ट ऑफ द नेशन, ठीक है कि नहीं। तो नेशनल डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है, तो हमने देखा कि पीपुल हैव डिफरेंट नीड्स एंड विशेस, लोगों का नीड्स, विशेस एंड देयर व्हाट व्यूज अबाउट डेवलपमेंट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो लोगों के बीच जब इतने सारे अंतर हैं, इतने सारे मतभेद हैं रिगार्डिंग डेवलपमेंट, तो एक नेशन का डेवलपमेंट हम अचीव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को लेके ही नेशन बनता है। जब लोगों में ही यूनिफॉर्मिटी नहीं है, लोगों के बीच इतने सारे डिफरेंसेस है, तो हाउ कैन यू अचीव डेवलपमेंट फॉर द होल नेशन। सो दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क एंड टू आंसर। देन देयर स्टैंड्स ऑन डेवलपमेंट में ऑल्सो वेरी फ्रॉम ईच अदर। तो अभी व्हाट इज द सोल्यूशन, व्हाट शुड बी द सोल्यूशन, व्हाट कैन वी डू टू अचीव डेवलपमेंट फॉर द नेशन irrespective of different opinions and different desires, different goals of different people. ये रहा solution. National development goals should benefit the majority, not some. हम जो भी टारगेट फिक्स करते हैं नेशन का डेवलपमेंट के लिए, जो भी स्टेप लेते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, हमको ये पहले देखना है कि उससे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल शुड बी बेनिफिटेड, नॉट ए स्मॉल सेक्शन ऑफ द पीपल बेनिफिटेड, ठीक है कि नहीं। तो जो प्रोजेक्ट से, जो काम से, जो चेंजेस से एक नेशन का मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को बेनिफिट मिलता हो, उसी को ही कहेंगे हम डेवलपमेंट। एंड वी शुड ऑलवेज सपोर्ट सच आइडियाज़। अगर कोई कुछ ही लोगों के लिए बेनिफिट है बट ए ह्यूज नंबर ऑफ पीपल आर बीइंग अफेक्टेड बैडली बाय सम स्टेप्स, देन वी शुड नॉट बट टेक दोज डिसीजंस और वी शुड नॉट सपोर्ट सच डिसीजंस, ओके। नेक्स्ट, इट शुड बी फेयर, जस्ट एंड लॉजिकल। जो भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो भी हम डिसीजन लेते हैं, वो फेयर होना चाहिए, अनफेयर नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अनजस्ट फॉर सम पीपल, वी शुड गिव जस्टिस टू ईच एंड एवरी वन, ओके।
एंड इट शुड बी लॉजिकल। लॉजिकल इन द सेंस, लॉजिकल का मतलब क्या होता है, जो भी हम करेंगे प्लान करके करेंगे, उसका प्रोज एंड कॉन्स को देख के करेंगे, उसका फ्यूचर कंसिक्वेंसेस को देख के करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो हर एक चीज़ हम देख के कोई डिसीजन लेंगे कि ये बदलाव आना चाहिए कि नहीं, यहाँ पे रिवर वैली प्रोजेक्ट होना चाहिए कि नहीं, यहाँ पे ये इंडस्ट्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो ये सब चीज़ देखने के बाद अगर हमको लगता है कि नो, ये करने से मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट होता है एंड किसी लोग कोई भी ज़्यादा लोगों के साथ हम इनजस्टिस नहीं कर रहे हैं एंड दिस इज़ रियली लॉजिकल एंड वाइजली टेकन डिसीजन, then only that can be developmental for the nation. Okay, we are coming to the end of this lesson today. आपके बुक का एक पेज को मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो एक पिक्चर दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन में, लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट, व्हाट शुड बी द डेवलपमेंटल गोल फॉर सच एन एरिया। जो पिक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसके बेसमेंट में एरिया में एक कुछ हट्स हैं, कुछ बस्ती टाइप का घर, छोटे छोटे घर हैं। तो ये एरिया में डेवलपमेंट का अर्थ क्या होगा, क्या चेंजेस लाने से वी कैन से दैट यस दिस एरिया इज गेटिंग डेवलप्ड। ओके, तो आई लीव दिस टू यू, प्लीज़ अपने खुद आप लोगों को ये सोचना है, आप लोग को इसको आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट, रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये यहाँ पे न्यूज़पेपर रिपोर्ट है जहाँ पे लिखा गया है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी डीलिंग विद पेट्रोलियम, एक मल्टीनेशनल आइवरी कोस्ट इन व्हाट इज दैट इन अफ्रीका, अफ्रीका में कंट्री आइवरी कोस्ट, वहाँ पे एक मल्टीनेशनल पेट्रोलियम कंपनी, उसने क्या किया था, एक लोकल कंट्रैक्टर को, जैसे कि जानते हो पेट्रोलियम जब प्रोडक्शन करते हैं बहुत सारा वेस्ट मेटल निकलता है, उसको डंप करना पड़ता है, उसको डिस्पोज करना पड़ता है। तो एक मल्टीनेशनल पेट्रोलियम कंपनी जो कि आइवरी कोस्ट इन अफ्रीका में लोकेटेड था, उसने एक लोकल कंट्रैक्टर को कंट्रैक्ट दिया था उसका जो वेस्ट मटेरियल है उसको लेकर डंप करने के लिए कहीं भी। तो वो जो कंट्रैक्टर ने क्या किया, उसने एक बहुत बड़ा रॉन्ग स्टेप ले लिया। व्हाट इज दैट, द वेसल डंप 500 टन्स ऑफ लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट। वो कंट्रैक्टर ने 500 टन का लिक्विड टॉक्सिक जो कि हार्मफुल वेस्ट है उसको लेके ओपन एयर में डंप कर दिया, ठीक है। कहाँ पे, इन द सिटी अबिजन नाम का एक सिटी में उसने वो वेस्ट मटेरियल को डंप कर दिया एंड जिससे कि वहाँ के एरिया में जो लोग थे दे सफर्ड फ्रॉम प्रॉब्लम्स लाइक नजिया, देन स्किन रैसेस, फेंटिंग एंड डायरिया। इस तरह का बीमारियों से वो लोग संक्रमित हुए, अफेक्टेड हुए, क्योंकि वो जो डंप मटेरियल से जो डंप किया ओपन एयर में प्रॉपरली उसको डंप नहीं किया गया, तो उससे जो फ्यूम्स निकला, टॉक्सिक वेपर्स निकला, या तो एयर को जो पोल्यूटेड किया, उससे बहुत सारे लोगों का लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, ठीक है कि नहीं। एंड मेनी पीपल डाइड, सम वेर हॉस्पिटलाइज्ड, 6000 ट्रीटेड फॉर सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग, एज यू कैन सी ओवर हियर 6000 पीपल वेर फाउंड टू हैव सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग। तो अभी ये क्वेश्चन है, ये है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है, हु आर द पीपल हु बेनिफिटेड। यहाँ पे ये जो पेट्रोलियम कंपनी जो उसने किया था और जो कंट्रैक्टर को कंट्रैक्ट दिया था, उसमें से बेनिफिट किसको मिला एंड किसको बेनिफिट नहीं मिला, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सेकंड, व्हाट शुड बी द डेवलपमेंटल गोल फॉर दिस कंट्री। ये कंट्री में डेवलपमेंटल गोल, इस तरह का जो कंट्री है वहाँ पे डेवलपमेंटल गोल क्या होना चाहिए, व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू टू अचीव डेवलपमेंट इन दैट एरिया, ओके, और फॉर द पीपल। So again it is up to you, you have to answer the question. I hope and I am sure that you will be able to answer it correctly if you have understood the concept clearly. Next, what can be some of the developmental goals of your village, town or locality। अपने घर के बारे में सोचिए, अपने टाउन के बारे में सोचिए, आप लोगों का लोकेलिटी के बारे में सोचिए, आपका स्टेट के बारे में सोचिए। क्या आपको नज़र आता है कि कोई ऐसा चीज़ है जो होना नहीं चाहिए और कोई ऐसा चीज़ होना चाहिए आपके एरिया में जो नहीं है एंड जिसका होने से आपके लाइफ में बदलाव आ सकता है, जो होने से जो पीपल लिविंग इन योर सराउंडिंग, लिविंग इन योर लोकेलिटी, दे कैन हैव बेटर लिविंग कंडीशंस। तो ये आपको सोचना है, आपका नज़रिया को बदलना है, आपको देखना है, समझना है सिचुएशन को, एंड यू हैव टू आंसर योर सेल्फ। एज आई टोल्ड यू, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो आप लोग जब इसको समझ पाएंगे तो आपके लिए डेवलपमेंट का अर्थ जो है क्लियर हो सकता है, आपके लिए क्लियर हो जाएगा कि क्या एग्जैक्टली डेवलपमेंट है फॉर माई एरिया और फॉर माई नेशन। सो आई होप you all understood this topic and we'll carry forward this lesson
with a new part of this topic in the coming session or coming slide. Till then, stay safe, stay healthy, enjoy learning. Have a nice day. Thank you.